रिजल्ट पे अभी मैं फोकस कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि to be very honest, I mean, on one side we are getting a lot of love. It's quite overwhelming, and on one side there is the usual, not the usual. I think it's a little out of usual, but there is, a sentiment on social media also. So I think that's made it even tougher to gauge. ओके, रेडियो सिटी 91.1 पर कड़क शो है और आज मेरे साथ बड़े कड़क गेस्ट्स आए हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इज कि आजकल हमें अपने स्पीड पर और अपने हिसाब से हम लोग ये सारे फिल्म्स देख पाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस गाइस, कंग्रेचुलेशंस शरण, अमित त्रिवेदी सर, जानवी एंड ऑफ कोर्स कौशल मुनि. बहुत बहुत बढ़िया, इट्स वंडरफुल. बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, वेलकम टू रेडियो सिटी और वेलकम टू कड़क. जानवी, विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट. The number of times that you sort of did kasrat and exercise in this movie was unbelievable. You started almost on one set in the beginning when you were training, then the training happened again. So I'm just thinking like you were probably the fittest person or fittest you that you'd ever been पूरी जिंदगी में after this movie, right? पूरी जिंदगी में, लेकिन शुरुआत वैसे नहीं हुई थी. शुरुआत में फिल्म के पहले हिस्से के लिए, फर्स्ट शेड्यूल के लिए मुझे एक्चुअली 5 kgs पुट ऑन करने पड़े. तो उसके लिए मेरा फिटनेस रेजिमेंट बहुत ही अलग हो गया था. मैं बस बैठ के खा रही थी दिन रात गाजर का हलवा, लस्सी, कुल्फी, बिरयानी, ये वो. तो प्रेप वैसे था. और फिर उसके बाद आई हैड 1 month and I couldn't do any of the obstacle course training or the military training before that, because that would make me lose the weight. So after I gained the weight, I had 1 month to lose all of the weight and do all of the training. So then after that, I had a month of march past, obstacle course training, heavy weight lifting to get like a little bit of, I don't know, the body language and all of that. Training काफी की है. करेला जूस के बारे में बताओ यार. Have you ever had real करेला juice? I'm not talking shooting वाला. मुझे करेला जूस तो काफी पसंद होता है, क्योंकि घर में काफी बनाते हैं, पापा भी पीते हैं और मम्मा हमें भी पिलाती थी. तो करेले के जूस से कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे. You're one of the few यार. मेरे घर पे तो सबसे worst वाला ये होता है. अच्छा शरण, I have to ask you, this is your big debut as a director and एक विकिपीडिया पे नाम तक नहीं है, 4 लाइनें तक नहीं है. What were you doing? आपका प्रिपरेशन कहाँ था? ये विकिपीडिया से. अच्छा, sorry, I lost you at the end. तो विकिपीडिया पर कुछ किया ही नहीं. I can't understand why. I mean, you're out, you're going to be announced to the world, और आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं दुनिया को. So this is like one. No, low profile is good. Let the work do the talking. That is better. No, but you're coming from the Dharma camp where low profile is anything but low profile. वहाँ पे हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक होती है, सारी चीजें पहले से सेट हो जाती है. So are you one of those directors who wants to stay सिर्फ shadows में मैं रहूंगा और literally मेरी फिल्म सिर्फ देखो, मैं दूसरी या तीसरी फिल्म में बात बताऊंगा अपने बारे में? No, so I don't have any such agenda as such. I mean, it is what it is. Like I think it's obvious when a person just makes an entry into the business. No one knows who he is, and that's absolutely fair. Let the work come. Hopefully, people like the film. People will reach out to me, and we will unravel naturally. तो यार for you, you know, सबसे पहले आपकी बड़ी डेट आती है और फिर ये दुनिया में ऐसे ये महामारी आ जाती है, राइट? सो सारे जो सपने एज अ डायरेक्टर होते हैं, एक्टर तो ठीक है, जानवी को तो ऑलरेडी वो देख चुकी है, अमित बहुत बार देख चुके हैं, कौशल जी भी बहुत बार देख चुके हैं. बट फॉर यू मस्ट बीन सुपर डिसअपॉइंटेड यार कि मैं वो थिएटर में सीटी नहीं सुन पा रहा हूँ, यू नो, फर्स्ट डे वाली, फ्राइडे की, सैटरडे की. यहाँ पे हम लोग घर पे बैठ के, यू गॉट योर वाईफाई और आई गॉट माय वाईफाई, और ये एक्साइटमेंट मेरी है, यू नो. So I myself miss watching films in a theater, but you must be mighty disappointed, yeah. To be honest, not really. To be very honest, not really. Obviously, when the pandemic hit and we all got worried, instinctively your first feeling will be like, oh God, what's going to happen? But to be honest, not too worried, because I mean, to be very honest, like Janvi and me have spoken very casually about the past, and I think this is a really test of that theory that like we want to make films for the joy of making films, and it's not depend on the Friday ka TV and the validation of the audience or the theater environment. I mean, that's not the reason. I mean, it would have been great, but that can't be the only reason to want to do this job. And I think it might sound a bit philosophical, but I really feel that way. Like, telling guys, we're going to watch it on TV, on Netflix. Everyone's going to enjoy it, hopefully, in a safe way, which is really important right now. And, yeah. It's all good. Getting to make my first film, I can't complain. Credits में तो अभी भी नाम आ रहा है यार. So congratulations, well done, welcome to the club.
और आपके साथ दो वेटरन्स हैं, अमित त्रिवेदी एंड कौशल मुनीर। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया है। लुक्स लाइक यू आल्सो नॉट हैड अ हेयर कट सर। मेरे भी बाल लंबे हैं, आपके भी बाल लंबे हैं। बट यू नो म्यूजिक फॉर ऑल पार्ट्स ऑलवेज बहुत एक्साइटिंग रहता है हर एक धर्मा फिल्म में। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक अनदर कैरेक्टर। और यहाँ पे लिटरली एक और कैरेक्टर था। यू नो इट वाज वीविंग द प्लॉट। जब जानवी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही है, जब जानवी यू नो एज गुंजन सक्सेना इज ट्राइंग टू रीच द क्रॉस रोड्स, चाहे पहला गाना था, उसका ट्रेनिंग गाना था, चाहे एंड में गाना था। सो आई थिंक द होल ब्यूटी वाज that you know you were a central character in the film। और मुझे पता है कि तुम ये बहुत पसंद करते हो, आप ये चाहते हो कि you know you always be part of a movie। So just the joy of being you know back in the Dharma camp and making some amazing music। Yeah, it was absolute pleasure of mine because I think after Manmarja had released in 2018, Karan sir had texted me saying that he loved the album and he wants to collaborate once again on a film, and that's when I met Sharan for the first time around that time, and I was very very happy जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे जब शरण ने बताया about the film, about the biopic of Gunjan Saxena, I was really happy and excited because these I have dealt with you know different kind of subjects, and it wasn't it is a challenge in a way to score for a biopic because it's not your regular love songs or dance songs that will play in the club. It's not that. You are actually serving the cinema at that point. You are doing your bit for the cinema, going with the screenplay and situations. So it is challenging, but I kind of I've started enjoying that. I'm loving it because I've done that quite a lot. So I was very happy. तो एक चीज तो हुई होगी कौसर, आपका और अमित का रिमोट कंट्रोल में चल रहा था पिछले 2-3 महीने, या फिर पहले से सब कुछ रेडी हो गया था क्योंकि पहले रिलीज मार्च में होने वाली थी? No, we were ready हाँ, तो वो काम हो गया था and अमित is very efficient। वो है ना, मतलब वो बहुत टाइम से और डिसिप्लिन से काम करते हैं। और इस बार जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो भी काफी you know sorted से हैं। His first film, but he knew what he wants, and you know we kind of went through the beats very organically and happily। तो काम तो अच्छे से हो गया था। You know the wordings of each song, normally ना मैं मेलोडी पे ही जाता हूँ, but इस बार ना मुझे एक्चुअल शब्द बहुत ज्यादा फील आ रहे थे because exactly जो कैरेक्टर जा रहा था उसके लिए काफी लिखा गया था। तो इसमें was there a lot of thinking that was going? It was not your usual you know melodious वाले गाने, it was very wordy songs। you know as an RJ, you know जब मैं गाने बजाता हूँ तो कई बार वो सिर्फ धुन में कई बार लोग खो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्दों का भी बड़ा ज्यादा खेल हो रहा था बिकॉज लाइक आई सेड कि बहुत सेटल कैरेक्टर था फिल्म का। तो इसमें इजी फ्लो फॉर यू या फिर बहुत बैक एंड फोर्थ गया था? क्योंकि एक सुपर एंथू फर्स्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं, अमित त्रिवेदी तो होते ही हैं सुपर एंथू, सो बैक एंड फोर्थ बहुत गया था कि नहीं? नहीं, आई थिंक ये बहुत एक टीम वर्क था। इट वाज genuinely a collaborative effort जहाँ हम तीनों इकट्ठे बैठ के काम करते थे। और मेरे लिए देखिए, क्योंकि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले एक तरह से पूरा लॉक हो चुका था फॉर द सिंपल रीजन कि भाई किसी की जिंदगी पे ये फिल्म बन रही है, तो आप you already know what it entails। So it was a very pleasurable experience contrary to our expectations। One would have thought that it would have been dry और you know कि अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, जो जानवी ने किया वो सारा काम। लेकिन हमारे लिए it was like we really enjoyed this unit। I've enjoyed working as a unit with Amit and Sharan, and thank you for paying attention to the words, and as a rule I think a lot before I write the words, so नहीं वो बिल्कुल है। and I guess क्योंकि मैं OTT पर देख रहा था तो ये ईयरफोन ज्यादा पास रहते हैं ना, तो maybe I was able to hear the words a lot more than compared to on a big screen। But you know it's almost like जानवी, हम आपको I feel पता नहीं कितने साल से मैं देख रहा हूँ, you know, but when I come to think of it, you're still making baby steps in cinema। So this is a huge new experience for you also। Now your friends will watch it, you know, there won't be those because it's not yet come out, but you would have already faced a lot of people like me who you met only once before in your life and commenting about the film and chatting about the film for the next 10 days। Are you being able to absorb this experience as an actress, you know, on OTT platforms?
It's very. You mean this promotional experience or just No, the just otherwise, experience? just realizing from their first film, and now here you're just going, okay, this is like I'm chilling in my house. I'm not going out Yeah, anywhere. it's Yeah. different for sure. It's not how Hmm. I think that when lockdown happened, we were a week away from promotion starting, from the trailer launch. So Correct. I was very pumped and I was very excited for all of that. But you have to adapt. I mean, what can you do? This is the need of the hour. We're just happy that we have the opportunity to put this film out and that people will have the chance to see it, because it's really, I mean, I know everyone works hard and films require that kind of hard work, but I really think that we've dedicated our heart and soul and our sweat and blood, very literally, to this film. And I hope that people recognize that and just see it with an open mind more than anything else. Wherever What it is, in a theater or at home. and also people should try and watch it in one go. But sometimes it's very difficult sitting at home and to be able to dedicate 2 hours. With y'all, I did dedicate those exactly 1 hour 50 minutes. जितना भी था मुझे बहुत पसंद आया. Why? Because I tell you, there was a lot of so especially for your character, I saw the narrative had a lot with you. It was not. I really thought, like, without giving away too much about the movie, मुझे लगा था end में just till the final scene wherein तुम्हारा और विनीत का जो वो एक moment आता है. Let's not reveal what that moment is. But there was a lot of it जहाँ पे script और reality में भी शायद ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, चाहे उसके भाई ने, चाहे उसकी माँ ने, till like the very end. And I really enjoyed that. मुझे लगा था बीच में शायद cinematic liberty ली जाएगी और जहाँ पे जानवी as a heroine को भी एक मौका मिल जाएगा, that triumphant जो situation आती है वो पहले आ जाएगी और बाद में सिर्फ एक climax होगा. But I think that narrative was fantastic because you were constantly negated by a brother or the people, and that was it's a very hostile experience. As a viewer, you're saying, oh, you can feel the pain of this girl. So I think that was very good. So as an actress, that's why Sharan, I think, played a lot of part with you. So we'd like to hear about that process. Sharan, you want to tell people about that process? Thank you. I mean, I think a lot of the credit in terms of what I think you said, in terms of even the writing and the way it was structured, the screenplay, a lot of it goes to the writers, Nikhil Mehrotra, Hussain, who kind of had that kind of understanding of pacing and drama and how it's important to kind of sustain the drama till the very end. And really, the film was about the journey. So I kind of giving up on that too early in the narrative, like you said, would have made you watch the film over 3 days. So I'm glad that did. I'm glad that didn't happen. And in terms of working with Janvi, particularly to kind of get the beats of this, it was a very organic and natural process. I remember watching her in Dhadak, and I was very like taken in by how that she had a sense of like real sense of honesty, sincerity, vulnerability on her face. Like there was just like that complete purity, which was completely in sync with like when I met Gunjan Ma'am. Like when I met Gunjan Ma'am, you expect to meet this really tough Air Force officer, the kind you've seen in all the Hindi films growing up. Correct. Yeah. She was a really warm, sweet lady who I thought I'll have nothing to speak to about because we come from different worlds. But I spent like 10 hours or 8 hours in their day in their house just chatting. So I was really taken in by Gunjan Ma'am's energy when I met her. And when I saw Janvi in Dhadak and then when we met, I had that real sense of purity of energy, which really excited me. And what I liked was like when we met Gunjan Ma'am, her whole struggle was that she was not the tallest or the most physically intimidating, and the whole world said, "Arey, choti ladki kaise karegi?" Correct. So in a way, the idea was also to cast someone who the world will feel like, "Arey, ye Air Force officer kaise banegi?" So that's the journey and struggle of the film. So I feel that was I think the thing that really was exciting to cast Janvi and take. Were you worried if Janvi would pull off anything like as a first time director? Sometimes you can get a little edgy. Yeah, Janvi, aisa karo, waisa karo, and it's not like she's also sitting on pots of experience. So was there ever that moment? No, so I think honestly, see, the honest thing is you don't know if anyone is really going to deliver. I mean, everyone, even the most experienced people, Sachin bhi zero pe out hota life mein, kabhi bhi. Yeah. So, God, the cricket analogies have started. He had the right mindset and the approach and attitude to say that, you know what, we'll give it our best. We'll put everything out there. We'll explore every option, and that's what we can really do. So I think the approach and the intent was solid, and I think as a first-time director, to have such a collaborative equation with an actor where you're not intimidated of the actor saying, "Sir, can I try this? Ma'am, can we try this?" It was like, "JK, let's just try this." Now, okay, done, got it, let's try it.
So that kind of energy is something that is, it's as good as it gets, I really feel. Fantastic. Janvi, one thing is always there, I think, a huge contrast to your first film also. So when you were signing, कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये करियर पाथ में बना लेती हूँ अपने लिए, और तुम्हारी ऐसी फिल्मों की जो लिस्ट आ रही थी, अब पता नहीं मुझे कब रिलीज होंगी, बिकॉज़ सारी टाइमलाइन सब चेंज हो गई हैं, बट ऐसे तुमने अपने ध्यान में रखा था, अच्छा ये मैं परफॉर्मेंस वाला करूंगी, ये मैं ऐसा वाला करूंगी? कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग चार्टिंग करते हैं अपने करियर पाथ की, स्पेशली आपके इतने सारे दोस्त हैं। हाँ, मुझे लगता है कि शायद कर सकते हैं ऐसे, बट आपने ऐसे किया? नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अभी कमर्शियल स्पेस में ट्राई करो, या इनफैक्ट ट्रेलर आने के बाद किसी ने मुझे कॉल करके बोला, लेकिन एक्टिंग कर रहे हो आपको तो मतलब प्रिटी लग के नाचना चाहिए ना, आप एक्टिंग कब से करने लगे? I was like, oh, अच्छा ठीक है, ये था। I guess, I mean, that's what people anticipated, but मुझे कहानी अच्छी लगी, इम्पोर्टेंट लगी, मुझे एज एन एक्टर लगा कि मुझे ये कहानी से बहुत सीख मिलेगी, इतनी एक्साइटिंग बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। एंड ऑनेस्टली शरण के साथ मेरी रैपो इतनी अच्छी तरह से बन गई थी, एंड बस एनर्जी सही लगी, और हाँ, आई जस्ट वांटेड टू डू इट। तो ऐसी कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था कि अच्छा अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो, ऐसे था ही नहीं। और आई डोंट थिंक, I mean, ये बस मेरा this is just what I think. I don't think anyone who's had a successful career has tried to graph it like that. I think good things happen when your intention is to do good work, not to I don't know, have an agenda and plot and plot. You should reply back to that person जिसने बोला था अभी आप एक्टिंग करना, कहते हाँ हम एक्टर ही हैं, एक्टिंग ही करेंगे यार। यहाँ पे सिर्फ no, but she was not. She meant it as a compliment. Correct. अच्छा, टॉम क्रूज मोमेंट आया क्या किसी का लाइफ में? यार कैसे नहीं हो सकता यार, ऐसे टॉप गन भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, मतलब कि जानवी के पास वो एविएटर्स तुमने बचपन से लगा रखे हैं, मतलब यू नो इन द फिल्म, वो ठीक है प्लेन थोड़ा अलग था, नो प्रॉब्लम, लेकिन जानवी, आई आस्क यू, यू आर लिटिल यंगर, लेकिन तुम टॉप गन देखिए, टॉप गन ऑफ कोर्स देखिए मैंने, ऑफ कोर्स। तो तुम्हें फील आई क्या टॉप गन वाली फील? ऑफ कोर्स कैरियर नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो जस्ट सच एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, जस्ट बी पार्ट, मतलब हम तो स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हैं। नहीं, बहुत एक्साइटिंग थी एक्चुअली। बहुत वक्त बिताया मैंने चॉपर के अंदर हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर को पायलट के साथ, तो और पहले ही दिन में उन्होंने ऐसे कुछ, आई थिंक नैपवर्थ फ्लाइंग टेक्निक वो था ना, जब वो व्हेन शी इज गोइंग लाइक दैट, तो मैं चॉपर के अंदर थी वो सीक्वेंस के लिए, एंड इट्स वेरी लाइक to be at that altitude, कभी oxygen levels गिर जाते तो आपको नींद आ जाती है, you feel a little dizzy, all of those things, but it was very it was such a cool experience to be on that tarmac, to sit in there, okay, ready for takeoff, wearing that helmet. You feel cool, you feel like you're in command of this really cool machine, and you're, you know, you see all of these amazing views. तो हाँ, टॉप गन वाली फील तो शुरू से आ रही थी मुझे। शरण, आपको तो आई होगी, आप तो शूट कर रहे होंगे ना ऐसे, आपको तो ऐसे ही लगा होगा। No, of course. In fact, Gunjan ma'am had told me that, and Gunjan ma'am's husband was also in the Air Force. For a whole generation, Top Gun was the key reason to actually want to become pilots and get into the aviation. And that Top Gun Josh is a big part of the aviation world. And I mean, thoda feel tha, obviously. Our aerial coordinator was somebody called Mark Wolf, who's done like the most amazing Hollywood films, and he's actually worked with Tom Cruise in the last Mission Impossible. Wow. So we also felt that, you know, from Tom Cruise now we are Janvi, Sharan. Amit, I'll come to you. Top Gun ka jo jaise if I'm talking about iconic tunes, ek tune always rehta hai, you know, that became so iconic at that point of time. When you were meeting Sharan, were you also thinking of, obviously because this was about a real life character, was there a brief that, you know, like I said, you always going to have trouble to try to give music जो मुश्किल है बायोग्राफी के लिए, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन बायोग्राफी के लिए भी बढ़ जाती है, बिकॉज लोग पहले से ही चेक कर चुके थे, पढ़ चुके होते, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, यू नो। सो म्यूजिकली were you making lots of changes also as you went along in the film also, या फिर एक जो सेट कर लिया और मेरे पास जो, because पूरी फिल्म आप ही कर रहे हैं, there is no other music director, पहले आपने जो साउंडस्केप बना दी उसी के साथ आप चल रहे हैं? हाँ जी, जो साउंडस्केप डिसाइड होता रहता है while you are working on the film, और वो ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है जहाँ पर आपने कुछ सोचा, मतलब यू आर रिएक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन
this particular script, आप अपने हिसाब से react करते हो, एक tune बनाते हो, and then you share it with the director. So it has to match with the vision of the director. So and also Karan sir, the producer here. So if it fits in well in everywhere, that becomes kind of the soundscape of the film. So with this, तो हम लोग काफी back and forth थी in terms of each and every song. आप सेट पर गए थे क्या? वैसे जाते नहीं, आप तो स्टूडियो के अंदर ही रहते हैं 90% ऑफ द टाइम. कभी-कभी जाता हूँ, but इस वाले में हम लोग नहीं गए थे. तो यहाँ पे तो जाने का मन था यार. I mean, सारे एयरफोर्स बेस, प्लेन वगैरह, ये सारी चीजें. अमित, you would have gone there for the first time. बिल्कुल. I think they were shooting in Georgia or some place. तो वो थोड़ा. I'm sure Dharma Productions could have given you an extra ticket. If you had asked, आपको मिल जाती ticket. Yeah, I'm sure, definitely. But I guess we were also caught up here, busy with something else. So उसकी वजह से शायद नहीं. But then I'm happy that we got the mood of the film correct. Sharan is happy, Karan sir is happy, we are happy. No, we're also happy. Kausal, I'll ask you now lots of questions and lots of I think everyone's become a writer. ये लॉकडाउन में ना या तो कुक बन गए सब लोग, या शेफ बन गए, राइटर बन गए, सब लोग अपने घर पे बैठ के बहुत लिख रहे हैं. सबसे मुश्किल चीज मुझे राइटिंग लगती है, और आई थिंक अब अहमियत राइटर्स की बहुत ज्यादा सामने आ रही है. चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो सीरियल्स आ रहे हैं, जो सीरीज आ रही हैं, लोग अब ये समझ लगे कि राइटर्स आर द मेन थिंग. तो ऑफ कोर्स यू आर राइटिंग लिरिक्स एंड यू आर डूइंग ऑल दैट, बट डू यू थिंक अब वो दर्जा सबको मिलने वाला है, वेयर फर्स्ट एक दौर था सिर्फ एक्टर का, उसके बाद सिंगर का आया, अब मुझे लगता है कि कलम पर बहुत ज्यादा लोग फोकस करने लग गए. डू यू थिंक वो समय आ चुका है? So in short, you're asking कि अपना टाइम आ गया? आना ही चाहिए. I think it's the start of it. I don't know if you've noticed in a few days ago, we lyricists got together and we also put out a video about giving lyricists credit, etc. लेकिन I think एक शुरुआत तो हुई है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है और वो exposure भी हो रहा है कि, and I think the OTT has a lot to do with it, whether a writer is if not on equal footing as she should be, but at least on is considered very carefully as well as the actor or the director. तो बिल्कुल होना चाहिए, and we welcome it, and we would, I mean, अभी मैं कह रही थी कि this is the first film where I have seen my name on YouTube on the screen, not in just as a thumbnail. So it's wonderful, So little changes. The thing is, it's not coming from some sort of narcissistic, कि मेरा नाम आ गया. No, it's just like it's due credit. It's like कि भाई हमने ये काम किया तो उसका आपको एक वो क्या मुआवजा मिल रहा है, and मुआवजा is not just the money. Or, yeah. So that feels great. Yeah. No, I think it's about time. Janvi, are you good with your numbers now? अब ये पहली बार ऐसा होगा कि अब बहुत सारे लोग जो हैं अब बॉक्स ऑफिस के थ्रू आपको आपकी वर्थ नहीं पता चल जाएगी. So this is a different thing also. अभी एक एक्टर कैसे गेज कर रहा है, आपके साथ में कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि this was perfect and this is not, because अब पता नहीं चल पाएगा कि what is the first day collection 4 दिन का क्या है, और शायद ऐसे 4-5 महीने 6 महीने चल सकता है, और क्या पता शायद ऐसे फ्यूचर में 50-50 हो जाए बॉक्स ऑफिस as well as this. So how is this experience? मैं अभी भी मुझे पता नहीं कि मैं कैसे गेज करूं कि रिएक्शन क्या है, कैसे है, क्योंकि it's tough. This is happening for the first time, but I think एक जनरल सेंस तो आ ही जाता है, और हमारे निर्देशक जी का ये बहुत ही फेमस सेइंग है जो ये हमें हमारे दिमाग में ड्रिल किया गया है कि it's all about the process. तो रिजल्ट पे अभी मैं फोकस कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि to be very honest, I mean, on one side we are getting a lot of love. It's quite overwhelming, and on one side there is the usual, not the usual, I think it's a little out of usual, but there is a sentiment on social media also. So I think that's made it even tougher to gauge what the reaction is. But I think पता चल जाता है, और हमने अच्छी नीयत से ये फिल्म बनाई है, ईमानदारी से बनाई है, और I think we all believe. मुझे ये बात बताओ, जब तुम अपने आप को देख रही थी स्क्रीन पर, क्या तुम एक नार्सिसिस्टिक एक्टर हो? नार्सिसिस्टिक एक्टर जो इनको पसंद आता है, ओ वाओ आई एम लुकिंग सो गुड, या फिर मैं बहुत बेकार लग रही हूँ? क्या आर यू मेकिंग फेसेस कि मेरे हेयर आउट ऑफ प्लेस यहाँ पे था, या फिर माय एक्सप्रेशन कुड हैव बीन बेटर? ऐसा चल रहा है? हैज दैट प्रोसेस स्टार्टेड विद यू?
yeah, I mean पहले ही फिल्म से मुझे मतलब ये समझ में आ गया था कि ये जांचना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पोटेंशियल है कहाँ कमी है। और जब मैंने ये फिल्म भी देखी मेरा दिमाग वहीं गया था, नॉट माई हेयर इज आउट ऑफ प्लेस और माई एक्सप्रेशन कुड बी बेटर, बट more like what would it have been like अगर मैंने ये feeling के साथ approach की थी, so things like that. But I think I think the first agenda when I watched this film or any of my performances is के how can it be better, what can I do better next time. That's always the I think the casting was brilliant in this. शरण आपके लिए उसके लिए मैं तालियां देना चाहूंगा because विनीत को एक बहुत ही मंझा हुआ एक्टर है, बहुत कमाल का एक्टर है। सही मौके उसको शायद नहीं मिल रहे हैं, उसको मिलेंगे, बट पंकज त्रिपाठी तो ऑफ कोर्स देयर। तो इस कास्टिंग पर काफी समय लगाया आपने? No, actually, to be very honest, I feel a lot of the casting felt like very obvious casting in my head. So, I mean, Vinit sir, actually, to be honest, I feel extremely privileged that we put together and they all came on board for this film and to tell the story. Vinit sir, Manav sir, Pankaj ji, Angad, Aisha ma'am, Shani. I mean, the whole... can you give me credit for Pankaj sir? I was coming to that story. When we were, Janvi and my first meeting, when I was narrating to her, at the end, she said, so who's the father? Like, she got really excited. So I said, we're thinking, and I'm thinking, Pankaj is a great choice. And she's like, exactly. And so Janvi was now obsessed. I was like crazy about it. So then when we... नहीं, अच्छा तालमेल भी अच्छा ना, कोई भी ओवर द टॉप नहीं जा रहा है। That's the best thing in this film. पूरी फिल्म में कोई स्क्रीचिंग नहीं हो रहा, जब कोई मिशन खराब भी हो रहा है ना, कोई चिल्ला नहीं रहा, जल्दी वापस आओ, ऐसे इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि ऐसा होता नहीं है असली जिंदगी में। So when he gave Pankaj the script, he said, "I'll give me 10 days. I'll read it and get back to you." So Janvi is now gone on a mannat, no eating non-veg for 10 days. Every day, that's it. And then 10 days later, I get a phone call to Sharan, and I'm driving. So now I'm driving. I've panicked. I've stopped in the middle of the road, and he said, "No, I really like the script. I'm on." I was in shock. Like it was like, wow. Like. और जानवी का बड़े चिकन टाइम, is it? No, मन्नत खत्म हुआ ना? हाँ, मन्नत तो उसी मिनट खत्म हुआ। So yeah, I mean, we've been really lucky that some actors that I love who are really amazing at what they do, they came onto the film and they came onto the film with the same approach of let's explore, let's have fun, and let's see where it goes. And they Guys, really, I think it's, believed in I'm sorry, I just wanted to say that they really, really believed in the story. I think everyone owned the story and I think felt the same passion towards telling it as Sharan did, as I think that was a very shared sentiment. You know, on a parting note, I just want to tell you, मुझे ऐसा लगा था कई बार ऐसी फिल्में जो है ना बहुत ही female centric and एक feminism को underline करते हुए चली जाती हैं. What you did not do, Sharan, was you kept it very chilled, very normal, very relaxed. And that's the beauty and that's I think your victory as a director, and you balanced all the performances also. और मैं always ही कहता हूँ कि अगर director कमाल का हो तो सारे actors ऐसे ही ना तोल जाते हैं अच्छी तरह. So thank you so much. I enjoyed the experience a lot. And this disconnected experience I hate. I wish I could have met you guys and then enjoyed it. Amit, thank you so much. Kaustubh, thank you so much. Janvi, we'll see you soon. And you have the best lighting. I have to say this. We all have rubbish lighting wherever we are. all the rest of us. That's where you've come out perfectly. Well done there. Thank you guys. Thank you, Amit. See you soon. Thank you very much. Thanks. All right. Bye-bye. Radio City.